Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Rachana Jadav. Today I'm going to tell you about how to install Python. Okay, तो आप कैसे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो? So just I will write it here Python. Okay, Python download and you will see here the website. Okay, of Python and you can see it over here. आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि version दिख रहे होंगे, right? So you can go to this version. This is the latest version and if you want to go for the old then it is given over there. आपको वहाँ जाकर आप कर सकते हो install. So I'll just click on this installation. So ये download हो जाएगा. Okay, तो ये download होने के बाद just click on that. आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे. So it will ask you whether you install now and with that customize. तो आपको अगर customize करना है तो आप customize कर सकते हो and you can select all. Here I will select it all the things and click on next. यहाँ आपको पूछ रहा है कि install for all users. Yes, I want to install for all users. You can select all the things over here और फिर बाद में click करिए install पे. Okay. So yes, now the installation has been started over here. इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट राइट कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है तो वो वैसे ही इंस्टॉल करेगा. ओके, आफ्टर दैट वी डोंट नीड इट. ऑफलाइन आप फिर बाद में पाइथन को यूज कर सकते हो. ओके, सो हियर इट स्टार्टेड एंड in the next video I will just share with you different programs. First of all, simple programs of Python. Okay, so be over here and please subscribe my channel so you can get the notification about my new videos. Okay, and I will also share with you one another thing that is by the mobile how you will use it Python. Okay, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को so you will come to know about it. Okay, so just it will take a time as I have told you कि वो टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि कैसे इंस्टॉल हो रहा है. After installation, yes, Python you can use it in both the ways. जैसे command prompt में भी आप use कर सकते हो and idle में भी use कर सकते हो. I will also explain you about it that what is the difference in between of that two. दोनों के बीच में भी क्या difference है वो भी आपको पता चलेगा. तो next video में मैं आपके साथ share करूँगी. I will share with you about it. Okay. Yes, there are different versions as you can see कि old version में भी अगर आपको करना है तो आप old version में भी आप कर सकते हो. यहाँ आपको दिख रहा होगा downloads में, right? So here all the different things are over here. Okay, आपको Windows के लिए करना है तो Windows के लिए, Linux के लिए, yes you can do it over there. Okay, you can see the different versions are given over there with that date. Okay, and you want to download it, देखिए यहाँ options आपको मिल रहे हैं. Okay, so you can go with the old version if you want it. अगर कितनी जगह पे ऐसा होता है कि ओल्ड वर्जन में वर्क कर रहे हैं तो आप ओल्ड वर्जन भी आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. ओके, आई प्रेफर लेटेस्ट वर्जन सो इट इज अपडेटेड सो इट इज गुड फॉर अस आल्सो कि हम लोग अपडेट रहे. ओके, यस इट विल टेक सम मोर टाइम. और ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पर आया है, राइट? सो आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपको दिखेगा कि हाँ आपको कहाँ अपने सी ड्राइव में आपने सेव किया हुआ है, मीन्स प्रोग्राम फाइल्स में. तो आप सर्च करके भी आप देख सकते हो दैट यू विल गेट इट ओवर देयर पाइथन. आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. यस, सो क्लोज करेंगे एंड आई विल जस्ट सर्च इट ओवर हियर. मैं यहाँ आपके सामने सर्च में लिखूंगी पाइथन तो आपको यहाँ मिल जाएगा. ओके, हियर यू कैन गेट इट द पाइथन ओवर हियर and even you can go by the C drive. आपको अगर C drive से देखना है then you can go to the C drive also. And yes, I'll just go to this PC and that C drive. Okay, program files and you can see it over here. आपको यहाँ मिल जाएगा Python. Okay, so yes, let me see. Okay, यहाँ आपके सामने Python आ गया. You can see it over here. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.